Hi friends. Today we are going to discuss about electric potential. But before we discuss about electric potential, we will take a few examples. Let's keep electric potential aside. So let me put a question to you first of all. So if I ask you what is potential, what comes to your mind? That's right. Potential means an ability to do some work. That's absolutely correct. Now let's take a few examples. You might have seen your mother soaking chickpeas in the night, and when you look at them in the morning, you would have found them swollen. Let's take another example. Instead of chickpeas, let's put a few raisins in water and let's observe them after some time. What will you see? You will see that the raisins have swollen up. In both the examples, there was one thing common. The common thing was, yes, that's right, the movement of water has happened, and that has happened from higher concentration of water to lower concentration of water. रेजिन्स जब हमने देखा था, जब वो नहीं भिगोए थे हमने, जब वो सूखे थे तो वो एकदम चपटे थे, पतले थे. जब हमने उनको पानी में डुबो दिया तो जाहिर सी बात है पानी ही इनसाइड रेजिन्स के अंदर गया होगा. और जब पानी अंदर गया है रेजिन्स के, तो पानी कहाँ गया है? पानी उस जगह गया है जहाँ कॉन्सेंट्रेशन पानी की बहुत कम थी. मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इन सिमिलर वे चिकपीस के साथ हुआ है. चिकपीस जब हमने रात में भिगोए थे तो बिल्कुल सूखे थे. जब हमने रात भर उन्हें भीगे रहने दिया तो वो चिकपीस सुबह उठकर हमने देखा तो वो फूल गए थे. मतलब उनके अंदर भी पानी घुसा था. Now let's take two more examples. हम दो वेसल लेते हैं. एक वेसल में पानी भरते हैं, दूसरे वेसल में भी पानी भरते हैं. दोनों वेसल्स को बराबर पानी भरते हैं पहले, और उसके बाद उनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं. एक ट्यूब से कनेक्ट करने के बाद हमने एक टैप लगाया हुआ है. नाउ वी विल जस्ट ओपन द टैप. व्हाट विल हैपन? वी विल सी nothing is happening. The water in both the vessels, wherever it was, it will remain over there. The level of the water will not change. तो water का level change नहीं होगा. Now let's close the top. Close the tap, and let's fill one of the vessels with water at a higher level. किसी भी एक वेसल में आप पानी को बढ़ा दें, एक हायर लेवल पर कर दें. अब उसके बाद नाउ आफ्टर दैट वी विल ओपन द टैप. देन वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर. दिस फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द वाटर. इट विल flow from higher level to lower level. Now let's take one more example. Let's have two objects, one at a higher temperature and another at a lower temperature. और इन दो ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें से एक गर्म है और एक ठंडा है, इनको हम जोड़ देते हैं. What will you observe? Yes, that's right. You will observe that the heat flows from the object which is at a higher temperature towards the object which is at a lower temperature. So इसका सीधा सा मतलब है इन सब एग्जाम्पल से कि चीज़ें मूव करती हैं हायर लेवल टू लोअर लेवल, एंड दैट्स नेचुरल. लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड वी जस्ट उछाल देते हैं हम इसको खाली. तो ये क्या होता है कि उछलता है और फिर नीचे आ जाता है, उछलता है और नीचे आ जाता है. तो दैट मीन्स when it reaches from this level to this level, it gains something, and that is called potential energy. We know this already. And when it gains this potential energy, it has the ability to do work. So that clearly means wherever potential is involved, work is involved. So now let's take two conductors.
टू चार्ज कंडक्टर्स, दो चार्ज कंडक्टर्स लिए हमने, हम इनको जोड़ेंगे या तो उनको पास मिलाकर ऐसे जोड़ दें, या you can use a metallic wire just to join them. What will we observe? We will observe that the flow of electrons is happening from higher concentration to lower concentration. Electrons flow करेंगे higher concentration से lower concentration की तरफ. भाई इसका ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे वो पॉइंट हमारे लिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं वो पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. बट जो हम करंट फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं, दैट इज वी कॉल दैट opposite to the direction of flow of electrons. So because of that, the point which has higher number of electrons, जिस point पे electrons ज़्यादा हैं, we call that point as negatively charged point, or we will say that point at a lower potential. The point which has lesser number of electrons, we will call that point as positive point, or the point at a higher potential. So the positive charge will actually flow from higher potential to lower potential. Now, हमने एक बात पहले भी की थी that wherever we talk about potential is related to work. Now we will discuss about the potential, electric potential. So now let's say there is a charge. There is a charge and this charge has its vicinity. इसका एक अपना दायरा होगा जहाँ पर ये किसी और चार्ज को अगर हम लेकर आएँ, the other charge will experience force, and this vicinity is actually called the electric field of this charge. So if we bring another charge towards electric field created by this charge, then we will have to do some work. And this work, ये जो work है ये डिपेंड करेगा हमारे टेस्ट चार्ज के वैल्यू पे. अब आप ये कह सकते हैं भाई ऐसा क्यों? भाई इसको समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक 1 किलो की चीज़ वहाँ से यहाँ तक रखूँ, तो मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा. और अगर मैं 1 किलो की चीज़ ना रख के मैं 10 किलो की चीज़ उठाकर वहाँ से यहाँ रखूँ, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. सो दैट क्लियरली मीन्स कि इट डिपेंड्स अपॉन द weight of the object. Similarly, in the case of charges, it depends upon the amount of the charge. The work done in bringing a charge in the vicinity of another charge depends upon the value of the charge. कि हम कितना चार्ज ला रहे हैं. अगर हम 1 कूलम चार्ज ला रहे हैं तो हमारा काम 1 कूलम चार्ज के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा. अगर हम 10 कूलम चार्ज ला रहे हैं तो हमें 10 कूलम चार्ज के हिसाब से काम करना पड़ेगा. अब ये जो चार्ज है और ये जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज व्हिच वी आर ब्रिंगिंग इन द विसिनिटी ऑफ द अनदर चार्ज, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज वर्क एंड चार्ज हैज अ रिलेशनशिप. अब इनकी रिलेशनशिप होती क्या है? इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय वोल्ट, एंड वोल्ट इज पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन and that charge which we have brought to a point in the vicinity of the electric field of another charge, the relationship is electric potential is equals to work done upon value of the charge. Electric potential is denoted by V. So V is equals to W upon Q. W is used over here to denote the work done, and Q is used over here to denote the charge. So the relationship is V is equals to W upon Q. Now we will also see the 1 volt of electric potential. So 1 volt of electric potential is quite clear. If
1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge, then the electric potential will be called as 1 volt. Now let's talk about the SI unit of this electric potential. So what is the SI unit of work? That's right, SI unit of work is joule. And what is the SI unit of charge? The SI unit of charge is coulomb. So the SI unit of volt becomes joule per coulomb. That's correct. But this relationship has been given by the scientist called Volta. And that's why we have the unit of potential as volt on the name of the scientist Volta. I hope you must have understood this electric potential. I have given you 4 examples. Just keep them in your mind about the raisins, the chickpeas, the object which we have thrown up and then it comes down. Just think about a hotter object and a colder object. How does the heat flows, and then think about how does the electron flows. You will be able to understand what the potential is. I'll take your leave as of now. We will discuss about potential difference in the next video. If you have any questions, you just send me a reply. I will clear all your doubts. Thank you so much. Bye bye.